मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग में मैंने जो लेक्चर ख़त्म किया था वो साउंड वेव्स था और साउंड वेव्स हमारा फिनिश हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है और छोटा सा चैप्टर है ये, इसको ध्यान से हम देखेंगे और इसको ऑनलाइन क्लास में ही हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, बस आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको ध्यान देंगे और सुनेंगे। सेम पैरेलली सारे स्टूडेंट्स क्या करिए कि नोट्स जरूर बनाइए, है ना। जो भी टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं या डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाइए, आपको एग्जाम के समय रिवीजन में थोड़ा सा बेनिफिट होगा। चलिए, तो सबसे चैप्टर हमारा है सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये हमारा चैप्टर है और हमें इसी को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फोर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स दो टाइप का, पहला डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स और दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलेंगे और रीस्टोरिंग फोर्स किसको बोलेंगे? अगर हम कोई फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी के लेंथ शेप साइज में जो चेंज होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा कि देयर इज डिफॉर्मिंग फोर्स पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रीस्टोरिंग फोर्स बताऊँ। डिफाइन कर लीजिए डिफॉर्मिंग फोर्स का डिफिनीशन। external force which tends to bring about a change in the length comma volume comma or shape of a body, or shape of a body is called deforming force, is called deforming force। ठीक है, अब रीस्टोरिंग, द नेम इटसेल्फ विच रीस्टोर्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो हैं अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो वापस उसको रीस्टोर अपने एक्चुअल साइड, प्रीवियस साइड में करेंगे। दैट फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी or object, then an internal resistance produced in the material, then an internal resistance produced in the material due to the intermolecular forces, which is called restoring force, ये क्या कहलाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। तो फिर से देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में दो टाइप का फोर्स हुआ, पहला डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ और दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स हुआ। डिफॉर्मिंग फोर्स मींस एक्सटर्नल फोर्स व्हिच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन आइदर लेंथ में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, शेप साइज में भी हो सकता है। दैट फोर्स इज डिफॉर्मिंग फोर्स, द नेम इटसेल्फ डिफॉर्म। रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ? जो वापस रीस्टोर करे, वैसा फोर्स जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो है उस बॉडी पे लगाएंगे, रेजिस्ट करेंगे और
एक्चुअल जो फोर्स लगेगा वो मॉलिक्यूल्स आपस में लगाएंगे, दैट फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे दोनों को, रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस इज द टाइप ऑफ फोर्स। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इलास्टिसिटी। टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं पहले। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी of a body by virtue of which it opposes any change in its shape or size, when deforming forces are applied on it. When deforming forces are applied on it and recover its original state and regain its original state as soon as the deforming force is removed. Deforming forces are removed. ध्यान से देखेंगे, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द चेंज इन इट्स शेप और साइज। ये क्या करता है इलास्टिसिटी कि कोई भी बॉडी में जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपोज करेगा शेप और साइज में चेंज करने में, और जैसे ही हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो वो वापस अपने एक्चुअल शेप और उसको रीगेन कर ले। दैट बॉडी इज नोन एज, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, और ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडीज। ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी, जो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं और वापस अपना शेप और साइज रीगेन कर लिया, दैट इज नोन एज इलास्टिक बॉडीज। और प्लास्टिक बॉडी क्या हुआ, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, उसके शेप साइज में चेंज हुआ और वो वापस अपना एक्चुअल शेप रीगेन नहीं कर पाया, दैट बॉडी इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, दैट बॉडी इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी। So types of bodies. First one is rigid body. Rigid body क्या हुआ कि वैसे बॉडी जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज नहीं हो, कितना भी हम फोर्स अप्लाई करें उनका पोजीशन चेंज नहीं हो, दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। सो ए बॉडी इज said to be rigid. A body is said to be rigid if the relative positions of the constituent particle remain unchanged when an external deforming force are applied on it. When an external
an external deforming force are applied on it. The nearest body is diamond, equivalent to rigid body. Equivalent to rigid body. Equivalent to rigid body. So types of body में first rigid body आ गया, then perfectly elastic body. Perfectly elastic body. As the name it is clear, a body which perfectly regain its original form after removal of deforming force. A body which perfectly regain its original shape and size after the removal of deforming force is called perfectly plastic body. Is called perfectly plastic body. Sorry, perfectly elastic body, not plastic, perfectly elastic body. जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा है और वापस अपना शेप साइज रीगेन कर लिया, दैट बॉडी इज नोन एज परफेक्टली प्लास्टिक इलास्टिक बॉडी. ठीक है, और जो अपना शेप साइज रीगेन नहीं किया, दैट बॉडी इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी. नेक्स्ट है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी. A body which will not regain its actual shape and size after removal of deforming force is called plastic body. जो एक्चुअल शेप साइज अपना गेन नहीं कर पाए आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी. ठीक है, ये हमारा बॉडी फोर्स का क्लैरिफिकेशन होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रेस एंड इट्स टाइप. स्ट्रेस एंड इट्स टाइप. ब्रेकिंग स्ट्रेस. Stress and its type. Stress. The formula for stress is restoring force per unit area is known as stress. The restoring force per unit area is called stress. So stress
is equals to internal restoring force by per unit area. ठीक है, internal restoring by per unit area. Or we can see F external by per unit area. अगर मैं इसका स्ट्रेस का ऐसा यूनिट लिखूंगा तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर. So this is Newton per meter square. Stress is equals to mLT minus 2 by L square. So mL minus 1 T minus 2. This is the dimensional formula for stress. तो करेंगे इसको. This is dimensional equation for stress और ये dimensional formula हो गया. It is similar to pressure. प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये भी तो एक तरीके का फोर्स ही है, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो प्रेशर का होगा, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. फर्स्ट वन इज longitudinal stress. The second one is volumetric stress. Volumetric stress, and the third one is shear stress. Shear stress. These are the three types of stress. और longitudinal stress भी दो टाइप का हमारे पास. फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेस and the second one is compressive stress. ठीक है, तो वन बाय वन हम डिफाइन करते हैं. पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कब बोलेंगे? When the stress is normal to cross sectional area. जब स्ट्रेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल है. When the stress is normal to the cross sectional area, in that case it is known as longitudinal stress. This is the example. When the stress is normal to the cross sectional area. Stress जब cross sectional area के normal होगा, जरूरी नहीं है ये ऐसा भी हो सकता है, तो ये कैसा स्ट्रेस कहलाएगा? longitudinal stress. And the formula for longitudinal stress it is F perpendicular by area. F perpendicular by area. Now longitudinal stress are of two types. Longitudinal stress are of two types. And what are they? The first one is tensile stress and the second one is compressive stress. Longitudinal stress दो टाइप का, एक tensile stress और एक compressive stress. Tensile कब बोलेंगे? When the perpendicular force applied on a body increase
in the length of a body when the perpendicular force applied on a body increases its length, then it is called tensile stress. Then it is called tensile stress. When perpendicular force applied on a body increases, then it is called tensile stress. Or when perpendicular force compresses a body, then it is known as when the perpendicular force applied on a body decreases its length, then it is called compressive stress. Then it is called compressive. तो perpendicular force जब लेंथ को elongate करेगी, जैसे यहाँ पे देखिए, इसके लिए ये क्या होगा, इंक्रीज होगा. जब हम फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो लेंथ क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा. तो ये कैसा होगा, टेंसाइल. और यहाँ हम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, तो ये कंप्रेसिव. तो वो परपेंडिकुलर फोर्स जो किसी बॉडी का शेप साइज इंक्रीज करेगा वो क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस. वो परपेंडिकुलर फोर्स जो किसी बॉडी का शेप साइज कंप्रेस करे वो क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव. तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बेसिकली दो टाइप का, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस व्हिच इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो दो टाइप का, टेंसाइल अगर लेंथ इंक्रीज होगा देन वी कॉल इट एज टेंसाइल, अगर लेंथ कंप्रेस होगा देन वी कॉल इट एज कंप्रेसिव. ठीक है. नाउ नेक्स्ट नोट करेंगे इसको. वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस. ये मेरा लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस. नेक्स्ट जो हम देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस. वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस. If equal normal forces are applied over every surface of a body, then it undergoes a certain change. In its volume. The force opposing the change in volume, the force opposing the change in volume per unit area is called volumetric stress. Volumetric stress. So volumetric stress
से, ठीक है। Equal normal forces are applied on every surface of a body, then it undergoes certain change in volume. क्या होगा कि हर एक बॉडी पे हम इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके बॉडी में जो चेंज होगा वो इक्वल चेंज होगा, और यही जो चेंज आएगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। ये सारे फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका सिंपली यूनिट और डायमेंशन सेम लॉन्गिट्यूडिनल हो, क्योंकि दे ऑल आर टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको। थर्ड हम देखते हैं शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसी का दूसरा नेम हम लिखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसी का दूसरा नेम हम लिखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस का ही दूसरा नेम हम लिखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। When the stress is tangential or parallel to the surface of body, when the stress is tangential or parallel to the surface of body, tangential or parallel to the surface of a body, then it is known as shear stress. Then it is known as shear stress. Due to this stress, the shape of body it changes. The shape of body changes or may be twisted, but volume, but not its volume. But not its volume, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस क्या है? टेंजेंशियल, जब किसी भी सरफेस के पैरेलल हम फोर्स लगाएंगे तो वो जो स्ट्रेस होगा वो शियर स्ट्रेस कहलाएगा या टेंजेंशियल कहलाएगा, अलोंग द टेंजेंट। इसकी वजह से बॉडी के शेप साइज में तो चेंज होता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, है ना, या ट्विस्ट। तो ये पोर्शन फिक्स्ड है, शियर स्ट्रेस, ये पोर्शन फिक्स्ड है बट फोर्स लगाने की वजह से इसमें चेंज होगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको भी। नेक्स्ट लास्ट स्ट्रेस जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस। Breaking stress, the fourth one is breaking stress. The minimum stress required to
cause the actual fracture of a material, cause the actual fracture of a मटेरियल, मतलब वो मिनिमम स्ट्रेस जिसके अप्लाई करने से उस मटेरियल में ब्रेक हो जाए या टूट जाए, इज कॉल्ड मटेरियल इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। द नेम इटसेल्फ ब्रेकिंग, मतलब वो मिनिमम फोर्स जिसके अप्लाई करने से वो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाए या टूट जाए, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। Dependence of breaking stress. Dependence of breaking stress are किस किस चीज पे डिपेंड करता है ब्रेकिंग स्ट्रेस? फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल, सेकेंड, टेम्परेचर, third, impurities, fourth, independence of breaking stress, independence of breaking stress, cross sectional area of or thickness, cross sectional area or thickness, second one, applied force, maximum load which can applied on the wire depends on maximum load which can applied on the wire depends on cross sectional area, nature of material, temperature, impurity. ठीक है, this is similar to all. Cross sectional area, nature of material, or temperature or impurity, टेम्परेचर और चौथा इम्प्योरिटीज। ये बेसिकली हमारा स्ट्रेस हुआ है। किस किस चीज़ों पे स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, एंड द थर्ड वन इज शियर स्ट्रेस, और चौथा ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिसको अप्लाई करने से अगर कोई बॉडी टूट जाए। और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस। इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। और मैक्सिमम लोड व्हिच कैन अप्लाइड ऑन द वायर डिपेंड्स ऑन ये नेचर ऑफ मटेरियल, ये टेम्परेचर और ये इम्प्योरिटी। ठीक है, अब स्ट्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। Given the ratio of two wires of same material, two wires of
same material, the ratio of two wires of same material is 2:1. Is 2:1. Find if they are stretched by same force. Find if they are stretched by same force. If they are stretched by same force, the ratio of stress. The ratio of stress. So stress क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. द स्ट्रेस ऑफ फर्स्ट बॉडी बाय स्ट्रेस ऑफ second body F1 by area 1 by F2 by area 2. So they are same force. F1 is equals to F2. The two will cancel. So S1 stress 1 2, that is A2 by A1, or A2 is equals to pi R2 square by pi R1 square. Pi cancel. So the wires ratio of wires of same material is 2:1. So 2:1 मतलब R2 is 1, R1 is 2. ठीक है. So 1 square by 2 square, that is 1:4. That is the answer. ठीक है. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है ब्रेकिंग स्ट्रेस से रिलेटेड है. इसको नोट कर लीजिए. फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं. The breaking stress of aluminium is the breaking stress of aluminium is 7.5 10 to the power 9 per centimeter square. Find the maximum length of aluminium wire. Find the maximum length of aluminium wire. Find the maximum length of aluminium wire that can hang vertically. That can hang vertically without getting broken. Without getting broken under its own weight. Broken under its own weight. Density of aluminum स्ट्रेस अपने ही वेट से ये टूटे नहीं, अपने ही वेट से ये टूटे नहीं. वेट जो फोर्स लग रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू mg
अपॉन एरिया। और मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी बाई एरिया। और वॉल्यूम को फिर क्या लिख सकते हैं, रो एरिया इंटू लेंथ इंटू जी बाई एरिया। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम हमें गिवन है, एल्यूमिनियम का ब्रेकिंग स्ट्रेस भी हमें गिवन है, बीएस ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना गिवन है, 7.5 10 to the power 4 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे अगर सीजीएस यूनिट में है तो बदलने की जरूरत नहीं है ना। तो ये रो दैट इज हमें एल निकालना है, तो एल के लिए हम फॉर्मूला क्या कर लें, ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया एरिया कैंसिल, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो इंटू जी। सो एल इज इक्वल्स टू 7.5 10 to the power 4 10 to the power 4 रो that is 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 8 है तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी, है ना। दिस विल बी आर लेंथ। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना। बदला कन्वर्जन इसलिए नहीं किया वैसे यूनिट में कि सारे जो यूनिट्स हैं वो सेम सीजीएस को बिलोंग कर रहे हैं, तो डाटा ये हम नॉट कन्वर्टेड। और अगर आप इसका सॉल्व करते हैं तो ये लगभग वैल्यू आएगा 2.3 इंटू 10 to the power 3 मीटर। सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में आएगा 2.35 सेंटीमीटर, ठीक है, और 2.3 मीटर, दोनों सेम ही है ना। ये मेरा बेसिकली स्ट्रेस हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है स्ट्रेन। और स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन is defined as change in dimension of the body to the original dimension। ठीक है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर हम देखेंगे तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हुआ, तो स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, the first one is longitudinal strain। The second one is volumetric strain। Volumetric strain, and the third one is shear strain। The third one is shear strain। Like stress की तरह longitudinal stress, volumetric stress, shear stress, तो यहाँ पे भी तीन हो गए, longitudinal strain, volumetric strain और shear strain। Now longitudinal strain is of two types। The first one is tensile strain and the second one is compressive strain। Tensile strain और compressive strain।
ठीक है, वन बाय वन अब हम सबको देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, नोट करेंगे इसको। स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसका ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है। चलिए डिफिनेशन नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, पहला क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज longitudinal strain. So longitudinal strain is defined as change in length upon original length. So longitudinal strain is equals to डेल्टा L by L। अब वो अगर इंक्रीज हुआ तो टेंसाइल होगा और डेल्टा L अगर लेंथ डिक्रीज हुआ तो कंप्रेसिव होगा। ठीक है, तो बेसिकली लेंथ को इंक्रीज दोनों हो सकता है, अगर हम इस पे फोर्स लगाएं और अगर लेंथ इंक्रीज हुआ, दिस इज डेल्टा L, तो ये कौन सा हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर हम ये फोर्स लगाएं और ये रिड्यूस हो गया, अगेन दिस इज डेल्टा, ये कैसा हो गया, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, दूसरा जो हम लोग देखेंगे दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। Pressure is applied on body, the volume changes. When pressure is applied on body, then volume changes. Then volume changes. So volume strain is equals to change in volume upon original volume. Change in volume upon original volume. Okay, that is delta V by V. ठीक है, नोट करेंगे इसको। लास्ट हम देखेंगे शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन when applied force is parallel to cross section, when applied force is parallel to cross section and the shape changes, and the shape changes,
this tan phi is equals to x by L, and when phi is very small, when phi is very small, then tan phi is nearly equals to phi, and this phi is equals to x by L, where x displacement of upper face relative to lower face. Displacement of upper face relative to displacement of upper face relative to lower face. Displacement of upper face relative to lower face upon distance between two faces. Distance between two faces. ध्यान से इसको समझिए सीरियस। जैसे मैं फोर्स अप्लाई किया तो सिर्फ अपर लेयर मूव हुआ, और ये जो अपर लेयर मूव हुआ, बाकी लोअर लेयर यही है, तो ये जो एंगल इसके साथ बना ये फाई हुआ, तो tan फाई हमारा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। tan फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये x और बेस ये, तो tan फाई x बाई एल। अगर फाई बहुत छोटा हो तो tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई, और फाई इज इक्वल टू x बाई एल। मतलब शियर स्ट्रेन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस जो डिस्प्लेस्ड हुआ अपॉन दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू फेस इज नोन एज शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन ये हम आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हुक्स लॉ देखेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन। ठीक है, इसका नोट्स आप बना लेंगे, जो भी इससे रिलेटेड नोट्स हो इसका नोट्स आप बना लेंगे और उसको रीड आउट करेंगे, है ना। ये छोटा चैप्टर है, खत्म जल्दी भी हो जाएगा।